A very good morning to all of you. I am Anshul Sharma, your biology teacher, and in this video tutorial we are going to discuss the chapter number 6 of ninth biology. The name of chapter is tissue. Before we understand the concept of tissue, let's discuss some general concept. Every living organism performs some of the processes and these processes are called life processes. जितने भी जीवित जीव हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. वाई दिस प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस? बिकॉज इफ एनी ऑफ दीज प्रोसेसेस स्टॉप इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव. इनमें से कोई भी एक प्रोसेस अगर रुक गई तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इट इंक्लूड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा. दे ऑल आर द लाइफ प्रोसेस. और अगर इनमें से एक भी प्रोसेस रुक जाए, द सर्वाइवल ऑफ द living organism is not possible, and that is why they are called life processes. The living organism are of two types depending upon the number of cells. They could be unicellular like amoeba, and they could be multicellular, that means made up of more than one cell. In unicellular, because they are only made up of single cell, so the all life processes include digestion, respiration, excretion, circulation. ये सारी चीज़ें जैसे एक अमीबा में केवल एक ही सेल इन सब चीज़ों को परफॉर्म कर लेती है. सिंगल सेल ऑफ अमीबा will digest, will excrete, will respire, will circulate and will locomote. But in the case of multicellular organism, because the body of organism is made up of multiple cells, however I have drawn here only 16 cells, but the body of multicellular organism made up of millions and billions of cells, as in the case of humans. So in the case of multicellular organism, क्योंकि बॉडी कई सारी सेल्स से मिलके बनी हुई है, so in the multicellular organism the life processes that we have discussed, the digestion, respiration and excretion, they are performed by the specialized group of cells. दैट मीन्स एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट हैं उन सब ने आपस में काम का बंटवारा कर लिया है. दैट मीन्स दिस ग्रुप ऑफ सेल विल परफॉर्म वन फंक्शन फॉर सपोज डाइजेशन, दिस ग्रुप ऑफ सेल विल परफॉर्म अनदर फंक्शन दैट इज रेस्पिरेशन. दैट मीन्स दे डिवाइड द लेबर. इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए सारी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करनी है, तो हर एक सेल अपना अपना लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के बजाय इन्होंने कामों को आपस में बांट लिया है. फॉर सपोज अगर ये डाइजेशन कर रही है तो ये और लाइफ प्रोसेस नहीं करेगी, डाइजेशन करेगी सबके लिए. अगर ये रेस्पिरेशन कर रही है तो ये और कोई लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेगी, बट रेस्पिरेशन करेगी इन सब के लिए. दैट मीन्स दे हैव डिवाइडेड द लेबर, एंड दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन ओनली इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. As you can see, in multicellular organism the different group of cells are performing different function, and to perform these functions they cells become specialized. For suppose in the case of humans, a group of cell that is called nerve cell, they perform the function of carrying the messages throughout the body. पूरी बॉडी में मैसेज को इधर से उधर लेके जाने का काम करती हैं. The muscle cells are the group of cells in human that contract and relax, and by their contraction and relaxation the human body can locomote. The blood is also consist of cells. The RBCs of the blood carries the oxygen. The remaining part of the blood also participate in the transport of food, hormones and etc. So you can see in the body of human different group of cells are performing the different functions. The muscle cells are contracting and relaxing and performing the locomotion not only for themselves, for the all cells of the body. The blood is transporting the food not only for the itself but for the throughout the body. The nerve cells are carrying the impulses not for only for themselves but for the all cells of the body. As similarly in the case of higher plant, you can see the water and the food is conducted with the help of specialized group of cells, and their group of cells are called vascular tissues. They are the xylem and phloem. So you can see in the multicellular organism the body is made up of many cells, and these many cells divide the labor, divide the life processes, and a particular group of cell which is specialized to perform a particular life process perform the particular respective life process. In the body of a multicellular organism, the group of cell that is performing a particular function is localized in a specific region of the body. That means we can say in a multicellular organism the particular function is carried out by a cluster of cell at a definite place in the body, and this cluster of cell is called the tissue. For suppose the control and coordination of the human body is controlled by the group of cells. These cells are the nerve cells and they are present in the brain. So the definite region of the body is the brain, the head region. The group of cell is the nerve cells, and they are performing the function of control and coordination. So in the body of a multicellular organism, the particular life process is performed with the help of a group of cells. The particular group of cell get specialized, that means their features become specialized. For suppose the nerve cells, they are performing the function of conduction of message, so they become elongated. The muscle cells, they get the ability to contract and relax.
and the blood have the physical property of being liquid to transport it throughout the body. So the cells become specialized to perform their function, and these group of cells that are performing a specific function, they forms a group of cell, and that group of cell is called the tissue. So if we go definition wise, a group of cells that are specialized to perform a particular function forms a tissue. That means cells का एक ऐसा ग्रुप जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गया है, उस ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल द ग्रुप ऑफ नर्व सेल, ये नर्व सेल्स का जो ग्रुप है, इट गेट स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कैरिंग द मैसेज थ्रू आउट द बॉडी. सो दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कंसिडर्ड एज अ टिश्यू. दिस ग्रुप ऑफ नर्व सेल कंसिडर्ड एज अ टिश्यू, एंड दैट टिश्यू इज नोन एज द नर्वस टिश्यू. Another example, the group of muscle cells. These muscle cells are specialized to contract and relax, and by which they are participating in locomotion. So this group of muscle cell is a tissue, and that tissue is considered as a muscular tissue. So the clear-cut concept is there. The group of cells that are specialized to perform a particular functions, they are forms that group of cell is considered as a tissue. Depending upon their occurrence कि वो कहाँ मिल रहे हैं, the tissues can be classified into two category. The tissues that are found in animals, they are called animal tissue, and we will discuss about the animal tissues in the separate video. The second is the plant tissue. The tissues that are found in plants, they are called plant tissue. As you can see, there are many differences between the plants and animals, and that is why there are several differences that can be seen in the plant and animal tissue. As you know, the plants are fixed, they are sedentary, they don't move, and that is why the most of the tissue in the plant body are there to provide the structural strength, to provide the structural supportive strength to the body, and most of the tissue are dead. Most of the tissue are dead. That means एक प्लांट की बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं उनमें से ज़्यादातर टिश्यू डेड होते हैं, एंड रीज़न इज़ वेरी क्लियर, बिकॉज डेड टिश्यू कैन प्रोवाइड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू द लिविंग टिश्यू. एक लिविंग टिश्यू के कंपैरिजन में डेड टिश्यू अच्छे से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. दैट इज़ वाई, बिकॉज प्लांट रिक्वायर मैकेनिकल सपोर्ट, दे आर हैविंग वेरी हैवी बॉडी, सो देयर मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड टिश्यू. डेड टिश्यू होने का एक और फायदा भी है, बिकॉज एनिमल्स लोकोमोट, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर लिविंग, एंड दैट इज़ वाई उनको एनर्जी नीड्स ज़्यादा होती हैं. मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लिविंग टिश्यूज ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए. प्लांट मूव नहीं करते और उनके मोस्ट ऑफ द टिश्यू भी डेड हैं, दैट इज़ देयर एनर्जी नीड इज ऑल्सो लो इन कंपैरिजन टू द एनिमल्स. नाउ प्लांट टिश्यूज कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी. अगर टिश्यू की सेल्स में डिवीज़न करने की कैपेसिटी है तो एक कैटेगरी, और अगर कैपेसिटी नहीं है तो दूसरी कैटेगरी. द प्लांट टिश्यूज whose cells have the capability to divide. प्लांट के ऐसे टिश्यूज जिनकी सेल्स में डिवाइड करने की कैपेबिलिटी है, दे आर फॉर्म्स द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एंड द प्लांट टिश्यू whose cells can not don't have the capability to divide, they forms the permanent tissue. नाम ही बता रहे परमानेंट, दैट मीन्स इनमें फर्दर चेंज पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेल्स अब डिवाइड नहीं कर सकती. द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसकी सेल्स डिवाइड कर सकती हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ दीज टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट. आपको पता है एनिमल्स में ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है, आपकी भी ग्रोथ 18-19 की एज के बाद रुक जाएगी, बट प्लांट्स में ग्रोथ पूरी जिंदगी भर होती रहती है. उनकी लंबाई बढ़ती रहती है, उनके तनों की ग्रिथ बढ़ती, चौड़ाई बढ़ती रहती है, एंड दिस इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनकी सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं पूरी लाइफ पर, एंड दैट इज वाई उनमें लगातार ग्रोथ भी होती रहती है. नाउ द परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. Depending upon the location in the plant body, the meristematic tissues are further divided into apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. We will discuss about them in the separate video. The permanent tissue, that means the tissue don't have the capability to divide, they are further divided into two categories. If the permanent tissue, that means group of cell, is made up of only one type of cell, that is a simple permanent tissue, and if a permanent tissue, that means a group of cell is made up of more than one type of cell, that is a complex permanent tissue. तो अगर एक ही तरह की सेल्स का बना हुआ है तो दैट इज़ अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, और अगर एक तरह से ज़्यादा तरह की सेल्स का बना हुआ है so that is a complex permanent tissue. The simple permanent tissues are further divided into three parts depending upon their function: the parenchyma, sclerenchyma, and collenchyma. And complex permanent tissue is further divided into two parts depending upon their composition and their function, that is xylem and phloem. Xylem perform the function of conduction of water in the plant body, phloem perform the function of conduction of food in the plant body. We will discuss about each and every type of tissue in detail in the further videos. Thank you very much for watching the video. Please provide the feedback about the audio quality, video quality, and content quality of the video in the comment section. Thank you very much.